Hi guys, welcome back to my channel. Today we are going to make masala chicken, this yummy recipe. So let's get it started. Here I've taken almost a kilo of chicken. To that I'm going to add salt, red chili powder, 1 teaspoon, yogurt, and mustard oil. इसको हम मैरिनेट करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। एंड ये मैरिनेशन होगा फॉर एन आवर और सो। अभी यहाँ पे मैंने लिया है हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर, जिंजर गार्लिक, ग्रीन चिलीज, फाइनली चॉप्ड अनियंस, एक अनियन एंड टोमेटोज। मस्टर्ड ऑयल में हम पकाएंगे। And here comes the star, the chicken after marination. So here I've taken a pan, उसमें हम mustard oil डाल देंगे पहले। I generally cook chicken in mustard oil because that gives a very nice flavor. You can use anything you prefer. Now in this chicken I'm going to add some potatoes. So उसको मैं fry करूँगी पहले. Once the oil is hot. Now this is optional, totally optional, but I like potatoes in my chicken. तो इसको हम कुक नहीं करेंगे, बस फ्राई करेंगे थोड़े से सॉल्ट के साथ। जब तक ये पक रहा है we'll blend the tomatoes, onion and garlic. जिंजर मेरे पास ऑलरेडी है, पेस्ट किया हुआ। पेस्ट हो गया है। I've added some water to paste it. पोटैटोज में अच्छे कलर आ गए तो हम अब निकाल देंगे इसको। I'm using the same oil and the pan. उसमें मैं डाल दूंगी एक बे लीव, कार्डमम्स, comes in the finely chopped onions. Once the onions are fried, उसमें मैं डाल दूंगी जिंजर, and comes in the tomato and onion and garlic paste. Now इस मसाले को अच्छे से भूनना है हमें। We'll take time और इसको भूनेंगे। This is on medium flame, medium to high flame पे पहले हम भूनेंगे। Comes in the turmeric powder, the red chili powder, coriander powder and cumin powder. This is masala chicken, तो मसालों को भूनना बहुत ज़रूरी है। Salt, we'll saute this on medium flame. इसको हम कवर करेंगे for 5 minutes एंड लो हीट पे अच्छे से भुनेंगे।
पका लेंगे बेसिकली। कवर हटाने के बाद आफ्टर 5 मिनट्स फ्लेम को हाई करें और भुने फॉर, थोड़ा सा पानी डालेंगे फॉर अ मिनट, इसको हम भून लेंगे अच्छे से। विल टेक द होल स्पाइसेस आउट। पता नहीं बे लीफ क्यों छोड़ दिया मैंने। एनीवे, दैट्स अ स्ट्रगल। This is on high heat guys। इसको 1 से 2 मिनट तक हम चलाएंगे और भुनेंगे। सी इट्स डन। तेल निकल गया है मसालों से एंड इट हैज़ अ ब्यूटीफुल कलर। नाउ विल ऐड द चिकन। इट केम लाइक अ लंप। अच्छे से इसको मिलाएंगे एंड विल सौटे दिस। द फ्लेम इज ऑन मीडियम और इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे फॉर ऑलमोस्ट 10 मिनट्स यू से। हमने डाल दिया ग्रीन चिलीज, इसमें पानी नहीं जाएगा बिल्कुल भी। I've kept it a little dried because I'm going to be eating this with some pulao. अभी आ गया हमारा गरम मसाला। We'll mix this. Please excuse the background songs. I'm not sure if you can hear it, but if you do, I'm sorry. भून लेने के बाद मैंने इसमें आलू डाल दिया है because we also have to cook the potatoes. Now we'll cover it on low flame. मैंने इसको for half an hour to 40 minutes मैंने इसको पकाया है and there's no water like I said, it's going to be dried. It smells really good in here. We'll cover this and cook it for like 2 to 3 minutes and डाल देंगे हमारा रोस्टेड cardamom, इलायची। A good mix and here my dinner is ready. It looks so good और खाने में और भी ज़्यादा अच्छा है टेस्ट। And this is how it looks like. Do give this recipe a try and do let me know in the comments down below. And if you guys like this recipe, don't forget to like, share and subscribe and stay tuned for more ahead. Thank you so much for watching. Have a good day.